ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयति राजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। दीपान्विता শুনতে পাচ্ছ? श्रूयते खलु? महोदय न श्रूयते। न श्रूयते। हरि ओम। श्रूयते खलु? महोदय कथमस्ति भवती? सम्यक् अस्मि। साधु। एतावान् विलम्बः कथं भो? जयश्री भगिनी भवती कथमस्ति? कुशली अस्मि। कुशली अस्ति। साधु शोभनं कुत्र प्रेषणीं स्थितिः। दृश्यते खलु? स्क्रीन् दृश्यते? महोदय दृश्यते। पूर्वस्मिन् दिवसे अस्माभिः एका कथा पठिता आसीत् खलु? पूर्वस्मिन् दिवसे अस्माभिः एका कथा पठिता आसीत्। महोदय कथायाः नाम किम् आसीत्? सुखदः नववत्सरः इति कथा आसीत् खलु? महोदय सा कथा अस्माभिः यावती पठिता अस्ति, एतावत् पर्यन्तं यावत् पठितमस्ति अस्माभिः, तस्याः कथायाः सारः कापि वक्तुं शक्नोति वा? स्थितिः कीदृशी आसीत्? नाम पुनः स्मरणं किञ्चित् करिष्यामः अद्य वयं। तदनन्तरं नूतनं पठिष्यामः। अनन्तरं स्मरति वा?
कथायाः स्थितिः कीदृशी आसीत् कथायां तस्यां कथायां नायकः कः आसीत् नायकस्य नाम स्मरति वा उमेशः उमेशः अस्ति। उमे- उमेशः नायकः कथायाः सारः कः इति वक्तुं शक्नोति वा अर्थेन रुधिर सम्पर्क কি হয় রক্তের সম্পর্ক আদিতः वदतु किञ्चित् वदतु कथायाः सार যতটুকু আমরা পড়েছি সেখানকার সারটা কি কি ছিল सारः स्मरति न वा उमेशस्य पत्नी गृहे नासीत् মানে इत्येवम् अवस्थायाम् उमेशस्य भातृजाया तेन सह भातृजाया तेन सह उमेशेन सह মানে না না उमेश उमेशस्य आदौ चिन्तयतु तदनन्तरं ट्रान्स्लेशन् करोतु মানে উমেশের পত্নী গৃহে ছিল না এরকম অবস্থায় উমেশের মানে ভাইয়ের বউ তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মানে উমেশের মা তাকে বলতে চায় যে সকাল সকাল উঠে গৃহ কার্য করতে তো উমেশের পত্নী বলে যে সব দায়িত্ব কি আমার উপরেই মানে বর্তাচ্ছে আমার উপরেই পড়ছে জ্যেষ্ঠ দেওর যে ভাসুরের পত্নীও তো আছে তারও তো কিছু কর্তব্য থেকে যায় তো মানে এই বিষয় নিয়ে উমেশের মায়ের সঙ্গে উমেশের ভাতৃজায়ের কলহ হয় এবং উমেশের এই ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে তো সে তার মানে সে অফিসে গিয়ে সেখান থেকে আর বাড়ি ফেরে না বাইরে খাবার খেয়ে এসে বাড়ি ফেরে এবং বাড়ি ফিরে এসে তার যে ওই কি ভাইয়ের ছেলে মানে ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরে চকলেট চায় আর এগুলো উমেশের খুব মানে উমেশ এগুলোও পছন্দ করে কিন্তু দেখে যে উমেশের মা তাকে খেতে ডাকলেও উমেশের মানে ভাইয়ের বউ তার জন্য খাবার রেডি করে রাখে না মানে সেগুলো রাখে না সেগুলো দেখে উমেশের খারাপ লাগে এবং ভাবতে থাকে যে এই ভাইয়ের জন্য আমি কত কিছু করেছি আর এখনো কত সাহায্য করে যাচ্ছে কিন্তু আজ ভাই কিছুই বললো না তার বউকে মানে কোনো কিছুই বললো না মায়ের সঙ্গে যে তার কলহ হলো সে ব্যাপারে কিছুই বললো না তো উনি ভাবতে থাকলো যে স্বার্থ अच्छा संस्कृतेन वक्तुं भवत्या बहु सम्यक् उक्तमस्ति कथायाः सारः तथैव चलति परन्तु संस्कृतेन किञ्चित् वदतु शृणोमि यदि तदेव कर्तव्यमस्ति खलु अस्माकं वर्गः अस्ति सम्भाषणवर्गः अतः संस्कृतेन वाक्यं वदतु भवती संस्कृतं बहु सम्यक् जानाति परन्तु संस्कृतं वक्तुमपि अभ्यासः स्यात् अतः संस्कृतेनैव वदतु अहम् एकवारं वदामि
सर्वाः शृण्वन्तु आम्। आं महोदय। अहं यद् वदामि तदेव वक्तव्यम् इति नास्ति। भवत्याः अपि नूतनं वाक्यं कृत्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। अहं केवलं कथं वक्तव्यम् एकवारं वदामि यावदस्ति। केवलं 5 वा 10 वाक्यानि वक्तव्यानि सन्ति। कथायाः नाम अस्ति सुखदः नववत्सरः। अस्यां कथायां नायकः अस्ति उमेशः। सः उमेशः एकस्मिन् कार्यालये कार्यं करोति। सः प्रतिदिनं कार्यालयं गच्छति, कार्यं करोति, स्वगृहं प्रत्यागच्छति। परन्तु अस्य नायकस्य उमेशस्य जीवने काश्चन घटनाः सन्ति। तस्य जीवनस्य काश्चन घटनाः सन्ति। तस्य पत्नी, तस्य भार्या वा गृहे न तिष्ठति। कस्माच्चित् कारणात् सा गृहे न तिष्ठति। अतः स उमेशः स्वपित्रोः, भ्रातुः, भ्रातृजायायाः च अधीने तिष्ठति। तस्य भ्रातृजाया यदा पचति स तदा खादति। कदाचित् तस्य भ्रातृजाया प्रातः न पचति चेत् सः अभुक्त्वा एव कार्यालयम् आगच्छति। कार्यालयम् आगत्य कुत्रचित् भोजनालये भोजनं कृत्वा तस्य बुभुक्षां स निवारयति। एकदा स उमेशः तथैव अभुक्त्वा कार्यालयम् आगतवान्। प्रायः प्रतिदिनम् उमेशः अभुक्त्वा कार्यालयं गच्छति इति दृष्ट्वा तस्य माता अथवा तस्य जननी मनसि खेदम् अनुभूतवती। सा जननी स्वकनिष्ठपुत्रजायाम् उक्तवती, कथं भवती प्रातः न उत्थाय उमेशस्य कृते भोजनं न करोति। इदं विषयमाश्रित्य तयोः मध्ये एकः द्वन्द्वः अभवत्। सः द्वन्द्वः उमेशस्य मनसि खेदम् अजनयत्। तेन खेदेन अथवा तस्मात् खेदात् स उमेशः तस्मिन् रात्रौ गृहं विलम्बेन आगतवान्। गृहे भोजनं न कृतवान्, बहिः भोजनालये भोजनं कृतवान्। एतावत् पठितमस्ति खलु अस्माभिः? आं महोदय। अर्थः स्पष्टः अस्ति? मया यद् उक्तं तद् अवगतं खलु? आं महोदय। एषः आसीत् कथायाः सारः। अद्य ततः परं यः अंशः अस्ति तम् अंशं वयम् आदौ पठामः। तदनन्तरम् अन्ततो गत्वा अद्य यावत् पाठ्यते तावत् तस्य सारं वयं पश्यामः। अवगतम्? श्रूयते खलु? हरि ओम। श्रूयते खलु?
श्रूयते महोदय। अस्तु, तर्हि वयं पश्यामः किमस्ति इति। तर्हि अस्माभिः दृष्टमासीत् उमेशः कार्यालयात् आगतवान्। तदानीम् आगत्य सः भोजनं न कृतवान्। सः तस्य मातरं स्पष्टमेव उक्तवान्, अहं गृहे भोजनम् इतः न करिष्यामि, कश्चिदपि मम भोजनविषये चिन्ता न करणीया इति सः उक्तवान्। तदनन्तरं पश्यामः, गृहस्य सूये प्रकोष्ठे सुखासने समासीनः सः दूरदर्शनदर्शने उद्यतः अभवत्। अद्य तस्य चित्ते पत्न्याः पार्वत्याः, सुतायाः सुदीपायाश्च स्मृतिः अतितरां नृत्यति स्म। तदानीम् एव अनुजस्य रमेशस्य पुत्राः प्रकोष्ठं समागत्य क्रीडारताः सन्तः अस्य अवधानं समाकर्षन्। 6 वर्षीयः भातृव्यः अपृच्छत्, पितृव्य, कदा भवान् वन्यजीविसञ्चारं दर्शयितुम् अस्मान् नेष्यति? 4th वर्षीया भ्रातृव्या अकथयत्, अहं तु द्विचक्रिकाम् इच्छामि, त्वं कदा दापयिष्यसि? 2 वर्षीयः लघुतमः भ्रातृव्यस्तु अस्पष्टतरलितध्वनिना तम् अकथयत्, अहं कन्दुकं पाञ्चालिकाञ्च इच्छामि। एवम् इमे त्रयः अपि नववर्षम् उपलक्ष्य स्वकीयान् विविधान् अभिलाषान् प्रकटितवन्तः। उमेशस्तु तेषां त्रयाणाम् अपि अनुजपुत्राणां बालसुलभं चाञ्चल्यं विलोक्य स्वकीयं दुःखं विस्मृतवान्। सः बालकानाम् अनुरोधानुसारं यदा आश्वासनं प्रदत्तवान्, तदानीं ते सर्वे तस्य प्रकोष्ठतः निर्गतवन्तः। विष्टरे एव शयानः सः शनैः शनैः निद्रापरवशः इव भवन् अलसताम् अन्यमनस्कताञ्च धरन् चिन्तारतः सञ्जातः। चलच्चित्रे इव तदीयं समग्रं भूतकालीनं जीवनं तस्य स्मृतिपथे समायातम्। जयश्री भगिनी, भवती पठतु। गृहस्य स्वीये प्रकोष्ठे सुखासने समासीनः सः दूरदर्शनः अभवत्। अद्य तस्य चित्ते पत्न्याः पार्वत्याः, सुतायाः सुदीपायां च स्मृतिः अतितरं नृत्यति स्म। सुदीपायाश्च स्मृतिः अतितरं नृत्यति स्म। तदानीमेव अनुजस्य
হুম পরেরটার পাচ্ছি না। হুম अनुजस्य रमे रमेश रमेशस्य पुत्राः प्रकोष्ठं समागत्य क्रीडा क्रीडात क्रीडारताः सन्तः तस्य सन्तः अस्य अवधानं समाकर्षन्। षड्वर्षीयः भ्रातृव्यः अपृच्छत्, पितृव्यः कदा भवान् वन्यजीवी वन्यजीवी सञ्चार वर्णजीवी हम्म वर्ण वर्णजीवी सञ्चारं दर्शयितुम् अस्मान् नेष्यति। अस्तु चतुर्वर्षीय अस्तु दीपान्विता भगिनी भवती पठतु। चतुर्वर्षीयाः भ्रातृव्या अकथयत्, हम्म अहं तु हम्म द्विचक्रिकाम् इच्छामि, त्वं कदा हम्म दापयिष्यसि? दापयिष्यसि दापयिष्यसि त्वं कदा दापयिष्यसि? हम्म द्विवर्षीयः लघुतमो भ्रातृव्यस्तु अस्पष्टो अस्पष्टतरो स्पष्टतरलितो ध्वनिना त्वम् अकथयत्, अहं कन्दुकं पाञ्चालिकां च इच्छामि। एवम् इमे त्रयः अपि नववर्षम् उपलक्ष्य स्वीयान् विविधान् स्वकीयान् विविधान् अभिलाषान् प्रकटितवन्तः। साधु शोभनम्। अंकिता भगिनी उमेशस्तु तेषां त्रयाणाम् अपि अनुजपुत्राणां बालसुलभं चाञ्चल्यं विलोक्य स्वकीयं दुःखं विस्मृतवान्। दुःख्यं न दुःखं 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 विस्मृतवान्। हम्म हम्म स बालकानाम् अनुरोधानुसारं यदा आश्वासनं प्रदत्तवान्, तदानीं ते सर्वे तस्य प्रकोष्ठतः निर्गतवन्तः। विष्टरे एव शयानः सः शनैः शनैः निद्रापरवशः इव भवन् अलसताम् अलसताम् अलसता हम्म अन्यमनस्कतां च धरन् चिन्तारतः सञ्जातः। चलच्चित्रे इव त्वदीयं समग्रं भूतकालीनं जीवनं तस्य स्मृतिपथे समायातम्। समायातं। साधु शोभनम्। तर्हि गृहस्य स्वीये प्रकोष्ठे सुखासने समासीनः सः
दूरदर्शन दर्शने उद्यतः अभवत्। कः उद्यतः अभवत्? उमेशः उद्यतः अभवत्। उमेशः उद्यतः अभवत्। किं दर्शने सः उद्यतः अभवत्? दूरदर्शन दर्शने उद्यतः अभवत्। दूरदर्शन दर्शने उद्यतः अभवत्। गृहस्य स्वीये प्रकोष्ठे कुत्र सः दूरदर्शन दर्शने उद्यतः अभवत्? गृहस्य स्वीये प्रकोष्ठे प्रकोष्ठे दूरदर्शन दर्शने उद्यतः अभवत्। गृहस्य स्वीय प्रकोष्ठे अर्थात निज प्रकोष्ठे स्वस्य प्रकोष्ठे सुखासने सुखासनं भवति खलु सोफा इत्यादिकं भवति न वा? सोफा इत्यादिकं भवति न वा? हरि ओम श्रूयते? हरि ओम हेलो महोदय श्रूयते खलु? सुखासनं नाम सुखासने समासीनः अर्थात सुखासने उपविश्य सः दूरदर्शन दर्शने उद्यतः अभवत्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? अर्थः स्पष्टः अस्ति? महोदय दीपान्विता भगिनी अंकिता भगिनी उभावपि उत्तरं प्रदत्ताम्। अद्य तस्य चित्ते पत्न्याः पार्वत्याः सुतायाः सुदीपायाश्च स्मृतिः अतितरां नृत्यति स्म। तर्हि उमेशस्य पत्न्याः नाम किम्? पार्वती। उमेशस्य पत्न्याः नाम पार्वती। नाम उमेशस्य पत्न्याः नाम पार्वती। तस्य सुतायाः नाम किम्? तस्य सुतायाः नाम सुदीपा। सुतायाः नाम सुदीपः। सुदीपा सुदीपायाश्च इति अस्ति खलु? सुदीपा लता षष्ट्यां लतायाः सुदीपायाः च संधिं कृत्वा सुदीपायाश्च। स्पष्टः अस्ति? तर्हि अद्य तस्य चित्ते कस्य चित्ते? उमेशस्य चित्ते पत्न्याः पार्वत्याः सुतायाः स्वपुत्र्याः पुत्री तस्य पुत्री अस्ति सुदीपा तस्याः सुदीपायाश्च स्मृतिः स्मरणम् अतितरां नृत्यति स्म नाम वारं वारं तस्य उमेशस्य मनसि तस्य पत्न्याः पार्वत्याः सुतायाः सुदीपायाश्च स्मरणम् आगच्छति स्मृतिः आगच्छति। तदानीम् एव अनुजस्य
रमेशस्य पुत्राः प्रकोष्ठं समागत्य क्रीडारताः सन्तः अस्य अवधानं समाकर्षन्। कस्य अवधानं समाकर्षन्? उमेशस्य अवधानं समाकर्षन्। उमेशस्य अवधानं समाकर्षन् नाम उमेशम् आकृष्टवान्। यदा भवती किमपि चिन्तयति तदानीं कश्चित् आगच्छति चेत् अस्माकं चिन्ताभङ्गः भवति अथवा कुत्रचित् कोलाहलः भवति चेत् वयं चञ्चलाः भवामः। अनन्तरम् अस्माकं ध्यानं तत्रैव गच्छति खलु, गच्छति न वा? हरि ओम् भवति खलु? हरि ओम्। तर्हि तथैव किमस्ति उमेशस्य यदा उमेशः स्वपत्नी विषये स्वपुत्री विषये चिन्तयति स्म तदानीम् एव किं जातं? तदानीमेव तस्य भ्रातुः पुत्राः, भ्रातुः नाम किमस्ति? उमेशस्य भ्रातुः नाम रमेशः। रमेशस्य पुत्राः उमेशस्य प्रकोष्ठम् आगत्य क्रीडन्ति। यदा ते क्रीडन्ति तदानीं तस्य उमेशस्य अवधानं तत्र गतम्। अवगतमस्ति? अवगतं खलु? संध्या अस्ति वा? अर्थे संध्या अस्ति? हरि ओम्। अर्थे संदेहः अस्ति? नास्ति। साधु। अनन्तरं वयं पश्यामः किं भवति। 6 वर्षीयः भातृभ्यः अपृच्छत्। भातृभ्यः नाम भाइपो। भ्रातुः पुत्रः। 6 वर्षीयः भातृभ्यस्य वयः कियान् अस्ति? वयः कियान् अस्ति? 6 वर्षीयः। 6 वर्षीयः। षड्वर्षीयः अस्ति। 6 वर्षीयः भातृभ्यः अपृच्छत्, पितृभ्यः कदा भवान् वन्यजीविसञ्चारं दर्शयितुम् अस्मान् नेष्यति? पितृभ्यः नाम जेठु। पितृभ्यः नाम पितृतुल्य। जेठु अथवा अत्र पितृभ्यः अस्ति जेठु। किं वदति? पितृभ्यः कदा भवान् वन्यजीविसञ्चारं दर्शयितुम् अस्मान् नेष्यति? वन्यजीविसञ्चारं नाम বন্যজীবদের নিয়ে যে চলচ্চিত্র ওই ধরনের কিছু। वन्यजीवी संचारं माने संचारं यदा वन्यजीवाः सञ्चरन्ति प्रायः जन्तुशाला। अस्तु। जन्तुशाला वन्यजीवी सञ्चारं। यदा वन्यजीवाः तत्र सञ्चरन्ति खलु
अनन्तरम् अनन्तरं चतुर्वर्षीया भातृव्या अकथयत्। भातृव्या नाम भाईजी भर्तृ भाईजी। भातृव्या अकथयत्। भातृव्यायाः वयः कियान् अस्ति? चतुर्वर्षीय चतुर्वर्षीया सा चतुर्वर्षीया। भातृव्या चतुर्वर्षीया। सा उक्तवती, सा अकथयत्, अहं तु द्विचक्रिकाम् इच्छामि। सा किमिच्छति? द्विचक्रिकाम् इच्छति। सा द्विचक्रिकाम् इच्छति। त्वं कदा दापयिष्यसि? दापयिष्यसि नाम देवे तुम गच्छति। ददाति भवति। दापयति नाम किम्? अत्र दास्यसि इति प्रयोगः भविष्यति। दास्यति মানে দেওয়া, দাপই মানে দেওয়ানো। ঠিক আছে, এখানে তো ওর জেঠুইকে দেবে, তাই না? तर्हि दास्यसि इति प्रयोगः एव साधु इति अहं चिन्तयामि। दापयिष्यसि इति न वक्तव्यं। यथा गच्छति नाम जा गच्छति, गमयति नाम মন করা যে যখন কাউকে প্রেরণা করা গমন করাচ্ছে। করতে হয়। दापयति तथैव। जानाति মানে জানে, ज्ञापयति মানে হচ্ছে জানানো। ঠিক আছে, সেই রূপ কদা দাপয়িষ্যসি, দেওয়ানো করানো। ঠিক আছে, এটা মানে দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে আমার মনে হয় কদা দাস্যসি, ত্বম কদা দাস্যসি, अयं प्रयोगः एव साधु भविष्यति। द्विवर्षीयः लघुतमः भातृव्यः। द्विवर्षीयः लघुतमः भातृव्यस्तु अस्पष्टतरलितध्वनिना तम् अकथयत्। कीदृशेन ध्वनिना अकथयत्? अस्पष्टतरलित ध्वनिना अकथयत्। अस्पष्टतरलितध्वनिना अकथयत्। अस्पष्टतरलितध्वनिना नाम ভাদো ভাদো ভাবে কথা বলাটাকে अस्पष्ट। वयः अस्ति द्विवर्षीयः। सः द्विवर्षीयाणां बालकानां तथा कथं भवति? अतः सा किं वदति? अहं कन्दुकं पाञ्चालिकां च इच्छामि। कन्दुकं नाम বল, কন্দুক তো বল। बॉल। পাঞ্চালিকং ন জানামি। पुतुल पुतुल उत्तलिका इत्यपि भवति, पाञ्चालिका इत्यपि भवितुमर्हति। पाञ्चालिकाञ्च इच्छामि। एवं इमे त्रयः अपि नववर्षम् उपलक्ष्य स्वकीयान् विविधान् अभिलाषाञ्च प्रकटितवन्तः। किं प्रकटितवन्तः? किं प्रकटितवन्तः? विविधान् अभिलाषान् प्रकटितवन्तः। विविधान् अभिलाषान् प्रकटितवन्तः। उमेशस्तु तेषां त्रयाणामपि अनुजपुत्राणां बालसुलभं चाञ्चल्यं विलोक्य
स्वकीयं दुःखं विस्मृतवान्। किं विस्मृतवान्? दुःखं विस्मितवान्। किं विस्मृतवान्? दुःखं विस्मृतवान्। स्वकीयं दुःखं विस्मृतवान्। किं विलोक्य स्वकीयं दुःखं विस्मृतवान्? अनुजपुत्राणां बालवसुलभं चाञ्चल्यं विलोक्य दुःखं स्वकीयं दुःखं विस्मृतवान्। न श्रूयते। महोदय न श्रूयते इदानीमपि। न श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते? हेलो महोदय श्रूयते। श्रूयते। अर्थः स्पष्टः अस्ति। बालकानाम् अनुरोधानुसारं यदा आश्वासनं प्रदत्तवान् तदानीं ते सर्वे तस्य प्रकोष्ठतः निर्गतवन्तः। कुतः निर्गतवन्तः? उमेशस्य प्रकोष्ठतः निर्गतवन्तः। उमेशस्य प्रकोष्ठतः निर्गतवन्तः। कदा निर्गतवन्तः? यदा उमेशः आश्वासनं प्रदत्तवान् तदा भ्रातृपुत्राः तस्य प्रकोष्ठतः निर्गतवन्तः। विष्टरे एव शयानः सः शनैः शनैः निद्रापरवशः इव भवन् अलसताम् अन्यमनस्कतां च धरन् चिन्तारतः सञ्जातः। कः चिन्तारतः सञ्जातः? कः चिन्तारतः सञ्जातः? हरि ओम्, श्रूयते खलु? हरि ओम्। हरि ओम्। हेलो न श्रूयते वा? हेलो श्रूयते? श्रूयते महोदय। विष्टरे एव शयानः सः शनैः शनैः निद्रापरवशः इव भवन् अलसताम् अन्यमनस्कतां च धरन् चिन्तारतः सञ्जातः। कः चिन्तारतः सञ्जातः? कः चिन्तारतः सञ्जातः? हरि ओम्। हरि ओम्। न श्रूयते वा?
हरि ओम। हेलो। हरि ओम। श्रूयते? आं महोदय। पूर्वं न श्रूयते स्म वा? इदानीं बिष्टरे एव शयानः सः शनैः शनैः निद्रापरवशः इव भवन् अलसताम् अन्यमनस्कतां च धरन् चिन्तारतः सञ्जातः चलच्चित्रे इव तदीयं समग्रं भूतकालीनं जीवनं तस्य स्मृतिपथे समायातम्। अर्थात् चलच्चित्रवत् तस्य भूतकालीनं जीवनं कीदृशम् आसीत् सर्वं तस्य स्मृतिपथम् आगतम्। अवगतमस्ति? अर्थः स्पष्टः अस्ति? हरि ओम। हरि ओम। न श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। श्रूयते। न तस्य दृश्यते। न दृश्यते। इदानीं दृश्यते। तस्य पत्नी पार्वती प्रायः वर्षेभ्यः पूर्वं श्वशुरालयं परित्यज्य मातृगृहं प्रति प्रस्थिता बभूव। उभयोः परिवारयोः अहङ्कारकारणात् दुराग्रहहेतोः निरर्थक कोपकारणात् वा तयोः उभयोरपि पतिपत्न्योः पारिवारिकं जीवनं पूर्णतया विनष्टम् इव सञ्जातम्। तस्य पिता 2 वर्षपूर्वमेव दिवङ्गतः, परन्तु यावत् सः जीवितः आसीत् तावत् तस्य सहमतिरेव न अभवत्। उमेशः श्वशुरालयं गत्वा पत्नीं पार्वतीम् आनयेत् इति विषये कश्चित् अतिसाधारणः लघुतमः वृत्तान्तः एव द्वयोः परिवारयोः मध्ये तथाविधः वृत्तान्तविशेषः सञ्जातः यत् तयोः वैवाहिकं बन्धनमेव विनष्टप्रायम् इव संवृत्तम्। अंकिता भगिनी एकवारं पठतु। तस्य पत्नी पार्वती प्रायः 7 वर्षेभ्यः पूर्वं श्वशुरालयं परित्यज्य मातृगृहं प्रति प्रस्थिता बभूव। उभयोः परिवारयोः अहङ्कारकारणात् दुराग्रहहेतोः
निरर्थक कोपकारणाद् वा हेतोः तयोः दुराग्रहो हेतोः निरर्थक कोपकारणाद् वा तयोः उभयोरपि पतिपत्न्योः पारिवारिकं जीवनं पूर्णतया विनष्टमिव सञ्जातं। तस्य पिता द्विवर्षपूर्वमेव दिवङ्गतः, परन्तु यावत् सः जीवितः आसीत् तावत् तस्य सहमतिरेव न अभवत्। उमेशः श्वशुरालयं गत्वा पत्नीं पार्वतीम् आनयेत् इति विषये कश्चित् अतिसाधारणः लघुतमः वृत्तान्तः एव द्वयोः परिवारयोः मध्ये तथाविधः वृत्तान्तविशेषः सञ्जातः यत् तयोः वैवाहिकं बन्धनमेव यत् न यत् 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 तयोः यत् यत् तयोः वैवाहिकं बन्धनमेव विनष्टप्रायम् इव संवृत्तम्। किम् उच्यते? तस्य पत्नी पार्वती। कस्य पत्नी पार्वती? उमेशस्य पत्नी पार्वती। उमेशस्य पत्नी पार्वती प्रायः 7 वर्षेभ्यः पूर्वं श्वशुरालयं परित्यज्य मातृगृहं प्रति प्रस्थिता बभूव। का प्रस्थिता बभूव? उमेशस्य पत्नी पार्वती प्रस्थिता बभूव। कुत्र प्रस्थिता बभूव? श्वशुरालयात् प्रस्थिता बभूव। मातृगृहं प्रति प्रस्थिता बभूव। मातृगृहं प्रति प्रस्थिता बभूव। किं परित्यज्य मातृगृहं प्रति प्रस्थिता बभूव? श्वशुरालयं परित्यज्य मातृगृहं प्रति प्रस्थिता बभूव। कदा मातृगृहं प्रति सा कदा गतवती अस्ति? 7 वर्षेभ्यः पूर्वं। 7 वर्षेभ्यः पूर्वं। तर्हि उमेशस्य पत्नी अस्ति। उमेशस्य पत्नी पार्वती। तस्य पत्न्याः नाम पार्वती। सा पार्वती 7 वर्षेभ्यः पूर्वं श्वशुरालयं परित्यज्य मातृगृहं गतवती। कुत्र गतवती? मातृगृहं गतवती। मातृगृहम् अस्तु। मातृगृहम्। उभयोः तयोः उभयोः अपि पतिपत्न्योः पारिवारिकं जीवनं पूर्णतया विनष्टम् इव सञ्जातम्। कीदृशम् इव सञ्जातम्? इदं सञ्जातम् पूर्णतया नष्टम् सञ्जातम्।
पूर्णतया विनष्टम इव संजातम। किम पूर्णतया विनष्टम इव संजातम? पारिवारिकं जीवनं पूर्णतया विनष्टम् इव। तयोरपि द्वयोहि पतिपत्न्योः पारिवारिकं जीवनं पूर्णतया किमर्थं महोदय? पूर्णतया विनष्टम्। इदानीम् उमेशः अस्ति स्वगृहे, तस्य भार्या अथवा पत्नी अस्ति तस्याः मातृगृहे। तर्हि पति पत्नी एकत्र न तिष्ठतः खलु। एकत्र पति पत्न्यौ एकत्र न तिष्ठतः, अतः तस्य संसारः इदानीं विनष्टः अस्ति। उमेशः कदाचित् अभुक्त्वा एव कार्यालयं गच्छति न वा? तस्य भातृजाया कदा पचति कदाचित् न पचति, सा भुक्त्वा गच्छति, द्वन्द्वः भवति गृहे, भवति न वा? आं महोदय। महोदय तयोः परिवारजीवनं पारिवारिकजीवनं नष्टम् अभवत्। तद्वयम् अनन्तरं पश्यामः किं कारणम्। उभयोः परिवारयोः अहङ्कारकारणात्। कयोः परिवारयोः? नाम उमेशस्य परिवारस्य तस्य पत्न्याः अपि परिवारस्य, उभयोः परिवारयोः अहङ्कारकारणात्। अहङ्कारकारणात् किं कारणात्? अहङ्कारकारणात् दुराग्रह हेतु दुराग्रह हेतु। निरार्थक निरर्थक कोपकारणात् वा। दुराग्रह हेतु नाम किमपि कठिन कारणात् वा अथवा निरर्थक कोपकारणात् वा। सा हेतुः कठिनम् अस्ति वा निरर्थकः अस्ति वा एतावत् सा न जानाति, परन्तु तस्य कारणात् इदानीं तस्य पतिपत्न्योः नाम उमेशस्य पार्वत्याश्च पतिपत्न्योः जीवनं विनष्टमिव अस्ति। अर्थः स्पष्ट अस्ति। उमेश जाने ना जेटा निरर्थक को नाकि हेतु नाकि अहंकार जे হোক কারণে হোক আমার জীবনটা আমার স্বামী স্ত্রীর যে নষ্ট হয়ে গেছে। अर्थः स्पष्ट अस्ति। तस्य पिता 2 वर्ष पूर्वमेव दिवंगतः। कस्य पिता दिवंगतः? उमेशस्य पिता। कस्य पिता दिवंगतः? उमेशस्य पिता। उमेशस्य पिता दिवंगतः। कदा दिवंगतः? 2 वर्ष पूर्वं दिवंगतः। 2 वर्ष पूर्वमेव दिवंगतः। परन्तु यावत् सः जीवितः आसीत् तावत् तस्य सहमतिरेव न अभवत्। कः जीवितः आसीत्? यावत् कः जीवितः आसीत्? सहपतेन कः इष्टः? उमेशस्य पिता। यावत् सः जीवितः आसीत् तावत् तस्य सहमतिरेव न अभवत्। किं न अभवत्? सहमतिः न अभवत्। सहमतिरेव न अभवत्। सहमतिः न अभवत्। उमेशः श्वशुरालयं गत्वा पत्नीं पार्वतीम् आनयेत् इति विषये। कस्मिन् विषये सहमतिः न अभवत्? उमेशः श्वशुरालयं गत्वा पत्नीं पार्वतीम् आनयेत् इति विषये इति विषये तस्य पितुः कदापि सहमतिः नाभवत्। तस्य पिता कदापि उमेशं नोक्तवान् पुत्र गच्छतु श्वशुरालयं पत्नीम् आनयतु इति। तस्य पिता कदापि नैव उक्तवान्।
कश्चित् अति साधारणः लघुतमः वृत्तान्तः एव द्वयोः परिवारयोः मध्ये तथा विधः वृत्तान्त विशेषः सञ्जातः यत् तयोः वैवाहिकं बन्धनमेव विनष्टप्रायमेव संवृत्तम्। कश्चित् अति साधारणः लघुतमः वृत्तान्तः नाम घटना अतीव साधारणी अस्ति, विशेषं किमपि नास्ति, अतीव साधारणी अस्ति, अतः घटना। कश्चित् अति साधारणः लघुतमः वृत्तान्तः एव द्वयोः परिवारयोः मध्ये, साधारणः वृत्तान्तः अथवा सामान्यः वृत्तान्तः वृत्तान्त विशेषः सञ्जातः। किमुच्यते नाम भवति खलु अस्माकं शरीरे स्फोटः भवति, स किं भवति प्रतिदिनं वर्धते न वा, प्रतिदिनं वर्धते न वा। আমাদের শরীরে যদি কোনো কিছু হয় স্ফোট জাতীয় ফোঁড়া হোক বা কোনো কিছু হলে চর্মরোগ ইত্যাদি হলে সে দিনে দিনে প্রতিদিন বাড়তে থাকে কিনা। প্রথমে আমরা একটু সামান্য বিষয় নিলেও ওটা আস্তে আস্তে কি করতে থাকে, বাড়তে থাকে। সামান্য জিনিসও একটা সময় বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। একটা দেখবে একটা কোনো সামান্য জিনিস কেটে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওই সামান্য কেটে যাওয়াটাও এমন একটা হয়ে যায়, হয়তো অনেকের কি হয়ে যায়, সেই কারণে অনেক সময় অনেক অঙ্গ বাদ দিয়ে দিতে হয়, হয় কি না भवती खलु। तत्रैव उच्यते अति साधारणः वृत्तान्तः एतथाविधः वृत्तान्त विशेषः सञ्जातः यत् तयोः वैवाहिकं बन्धनमेव विनष्टप्रायमेव संवृत्तम्। মানে ভেবেছিল পারিবারিক ঘটনা, স্ত্রী কয়েকদিন চলে গেলে ঘটনা মিটে যাবে, স্ত্রী চলে আসবে, কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটাও এমন বিশেষ আকার নিয়ে নিয়েছে যে তার স্ত্রী ছেড়ে চলে গেছে এবং তার ফলে তাদের সাংসারিক জীবন প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। অর্থাৎ স্পষ্ট अस्ति, अर्थात् स्पष्ट अस्ति। आम महोदय। इदानीम् उमेशः चिन्तयति स्म पार्वत्यां कः दोषः आसीत्। आधुनिकयुगस्य चिन्तनं संस्कारं च विलोक्य तु कथयितुं शक्यते यत् सा सरला निश्चला च सती युगबोधविहीना निरीह बभूव। प्रायः सा मम परिवारस्य वातावरणे सामञ्जस्यं स्थापयितुं समर्था न अभवत्। श्वश्रुई सा कदाचित् अपि संतोषप्रदा न अभूत्। श्वस्रवे। उमेशः चिन्तयति स्म। कः चिन्तयति स्म? उमेशः चिन्तयति स्म। उमेशः किं चिन्तयति? पार्वत्यां कः दोषः आसीत्। कस्यां कः दोषः आसीत्? पार्वत्यां कः दोषः आसीत्। পার্বতীর কি দোষ ছিল এটা উমেশ চিন্তা করছে। উমেশः চিন্তয়তি। आधुनिकयुगस्य चिन्तनं संस्कारं च विलोक्य तु कथयितुं शक्यते यत् सा सरला निश्चला च सती युगबोधविहीना निरीह बभूव। आधुनिकयुगस्य चिन्तनं संस्कारं च विलोक्य कथयितुं शक्यते। किं विलोक्य कथयितुं शक्यते? आधुनिकयुगस्य चिन्तनं संस्कारयितुं शक्यते। चिंता इसका समस्त কিছু দেখে सती युगबोधहीना सरला।
निश्चला उच्यतां पार्वती कीदृशी आसीत् सरला निश्चला सरला सती निश्चला च जुगबोध सती विहिनी युगबोध बभूव। युगबोधविहीना निरीहा बभूव। इव महोदय विलोक्य किमर्थम्? संस्कार च विलोक्य विलोक्य माने निश्चल कि नाटक। देखिए लोगों ने देखिए আদিকাইসি সংস্কার মানে কি দর্শন করে আধুনিক যুগে চিন্তাধারা সংস্কার সমস্ত কিছু দেখে অত্যম সাক্ষ্যতে বলতে পারি যে সা সরলা সে ছিল সরল নিশ্ছলা তার মধ্যে কোনো ছল চাতুর্য ছিল না নিশ্ছলা ছলবিহীনা সতী যুগবোধবিহীনা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে চলতে পারতো না युगबोधविहीना युगबोधविहीना विहीना नाम नास्ति किं विहीना युगबोधविहीना युग युगस्य बोधः नास्ति युगः नाम ज्ञानं युगस्य ज्ञानं नासीत् इति सा निरीहा बभूव एवं निरीह ছিল ज्ञातवती अर्थः स्पष्टः अस्ति अंकिता भगिनी दीपान्विता भगिनी च महोदय स्पष्टमस्ति। श्रूयते मम परिवारस्य वातावरणं स्थापितुं समर्था न अभवत् सा नाम पार्वती सा पार्वती प्रायः स्पष्ट रूपेण न श्रूयते। हरि ओम न श्रूयते श्रूयते स्पष्ट रूपेण न श्रूयते। किञ्चित् किञ्चित् इदानीं श्रूयते खलु स्पष्टं स्पष्टम्। तर्हि किम् उच्यते महोदय न श्रूयते। न श्रूयते न श्रूयते।
हरि ओम श्रूयते? महोदय श्रूयते। इदानीं श्रूयते खलु? आं महोदय। महोदय श्रूयते। प्रतिदिनं महोदय, यदि त्वं एषः कथं शेर् करोतु अस्तु अहं वर्गं प्रेषयामि। पूर्वे। एनां कथाम् अहं प्रेषयिष्यामि। तर्हि किमस्ति यत् सा सरला निश्चला च सती युगबोधविहीना निरीहा बभूव। प्रायः सा मम परिवारस्य वातावरणे सामञ्जस्यं स्थापयितुं समर्था न अभवत्। प्रायः का सा मम, सा नाम सा का? उमेशस्य पत्नी पार्वती। पार्वती प्रायः सा पार्वती मम परिवारस्य कस्य परिवारस्य? उमेशस्य परिवारस्य। उमेशस्य परिवारस्य वातावरणे अर्थात তাদের পরিবারের যে কালচার तस्य परिवारस्य वातावरणे सामञ्जस्यं स्थापयितुं समर्था न अभवत्। सामञ्जस्यं स्थापयितुं समर्था न भवत्। का समर्था न भवत्? पार्वती। का समर्था न भवत्? पार्वती। পার্বতী কি করছিল? তাদের পরিবারের যে আবহাওয়া, যা পরিবারের যে কালচার, সেখানে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিল না। स्वस्रै सा कदाचिदपि सन्तोषप्रदा न अभूत्। श्वश्रु नाम शाশুড়ি। श्वश्रुयै মানে কি? শাশুড়ির কাছে। सा नाम का? सा पार्वती। कदाचिदपि संतोषप्रदा न अभूत्। संतोषप्रदा कीदृशी नाभूत्? संतोषप्रदा नाभूत्। সে কখনোই তার শাশুড়ির মনের মতো হয়ে উঠতে পারেনি। सा कदाचिदपि
सन्तोषप्रदा न अभूत्। श्रूयते खलु? आम् महोदय। आम् महोदय, श्रूयते। एकदा उमेशः यदा कार्यालयं गतः पार्वत्याः पिता सुतां द्रष्टुकामः गृहं समागतवान्। कः समागतवान्? पार्वत्याः पिता समागतवान्। पार्वत्याः पिता समागतवान्। कुत्र समागतवान्? उमेशस्य गृहे समागतवान्। गृहं समागतवान्। गृहेण गृहं समागतवान्। कथं समागतवान्? यदा उमेशः कार्यालयं गतः कथं समागतवान्? কি কারণে এসেছিল? সুতাম तं द्रष्टुकामः गृहं समागतवान्। समागतवान्। गृहं सुतां द्रष्टुं गृहं समागतवान्। तदा उमेशः कुत्र आसीत्? उमेशः गतः कार्यालयं गतः आसीत्। सः स्वभावेन उग्रः रोषशीलश्च। कः स्वभावेन उग्रः रोषशीलश्च? पार्वत्याः पिता स्वभावेन উগ্রশীলশ্চ। বাবা মানে উমেশের শ্বশুর কি ছিল? স্বভাবেন উগ্রহ, স্বভাবে সে ছিল উগ্র এবং রোষশীলশ্চ। রোষশীলা নামা রাগী। রাগী। न ज्ञायते तस्मिन् दिने गृहे किं प्रवृत्तं कथञ्च संकटे उग्रता संजाता इति। पार्वत्याः पिता तु पूर्वापरम् अविचार्य पार्वतीं तस्याः एकवर्षकल्पां सुताञ्च सहैव नीत्वा स्वगृहं प्रति प्रस्थितवान्। न ज्ञायते तस्मिन् दिने गृहे किं प्रवृत्तं किं जातं किम् अभवत् अहं न जानामि। तस्मिन् दिने गृहे किम् अभवत्, আমি জানি না সেই দিন বাড়িতে কি ঘটেছিল। অর্থ স্পষ্ট अस्ति? মহোদয়, স্পষ্ট। कथञ्च संकटे उग्रता संजाता इति। कथञ्च संकटे उग्रता संजाता नाम কি কারণে যে তারা উপরে উঠেছিল। কে? তস্য পিতা। তস্য পিতা কস্যাः পিতা? पार्वत्याः पिता। পিতা উগ্রः ভবৎ। জানি না কি কারণে পার্বতীর বাবা রেগে গিয়েছিল। पार्वत्याः पिता तु पूर्वापरम् अविचार्य। पार्वत्याः पिता तु अर्थात तस्य श्वशुरः, उमेशस्य श्वशुरः पूर्वापरम्। पूर्वापरम् नाम आगे पीछे ना विचार, आगे पीछे ना पूर्वापरम् अविचार्य, आगे पीछे ना चेभेबे पार्वतीं तस्याः एकवर्षकल्पं सुताञ्च। पार्वतीকে এবং তার এক বছরের মেয়েকে সুতাঞ্চ সাহৈব নীত্বা একসঙ্গে নিয়ে स्वगृहं प्रति प्रस्थितवान्। ज्ञातम्? अर्थः स्पष्टः अस्ति? महोदय। प्रस्थानसमये सः कथितवान्। कः कथितवान्? पार्वत्याः पिता कथितवान्। पार्वत्याः पिता कथितवान् अर्थात् उमेशस्य श्वशुरः कथितवान्। किं कथितवान्? अयं वैवाहिकसम्बन्धः अद्य समाप्तः इति। এই বিয়ের সম্বন্ধ আজকেই শেষ। अर्थात् स्पष्ट अस्ति? महोदय, स्पष्ट अस्ति।
उमेशस्य पितरौ तु तस्य एतत् कार्यम् अपमानकरं मत्वा प्रतिष्ठा प्रश्नम् अध्याय तं सम्बन्धं योजयितुं कञ्चन प्रयासम् एव न कृतवन्तौ। श्रूयते? महोदय श्रूयते। उमेशस्य पितरौ तु उमेशस्य पितरौ नाम उमेशस्य पिता माता पिता दुजन उमेशस्य पिता माता च पितरौ तु तस्य एतत् कार्यं कस्य एतत् कार्यं पार्वत्याः जनकस्य अथवा तस्याः पितुः पार्वत्याः जनकस्य एतत् कार्यम् अपमानकरं मत्वा प्रतिष्ठा प्रश्नम् अध्याय प्रतिष्ठा प्रश्नम अध्याय মানে এটা একটু দেখতে হবে। প্রতিষ্ঠা প্রশ্ন মানে মনে হচ্ছে হেয় ভাব করা ইত্যাদি। प्रतिष्ठा प्रश्नम अध्याय तं सम्बन्धं योजयितुं कश्चन प्रयासमेव न कृतवन्तौ। अर्थ स्पष्ट মানে তাদের হেয় করেছে অপমান করেছে এইরূপ চিন্তা করে উমেশের বাবা মা কখনোই চায়নি যে এই সম্বন্ধটা আর হোক। জ্ঞাতম খলু? योजयितुं মানে योजयितुं মানে সম্বন্ধ জোড়া করা, যোগ করা। ও আচ্ছা আচ্ছা योजयितुं যোগ করা। योजयितुं তুমুন প্রত্যয় আছে, তুমুন প্রত্যয় আছে। হ্যাঁ उमेशस्तु तदा तथाविधः परिपक्वमतिः अनुभवसम्पन्नश्च न आसीत् यत् अस्मिन् विषये स्वतन्त्रतया निर्णयं कर्तुं समर्थो भवेत्। उमेशस्तु उमेश किन्तु तखन तथाविधः परिपक्वमतिः अनुभवसम्पन्नश्च नासीत्। कीदृशं नासीत् उमेशः? तथाविध परिपक्वमति অনুভব সম্পন্ন না অর্থাৎ উমেশের তখন বয়সও বেশি নয়, সে তার বুদ্ধিও ততটা ভালো নয় এবং তার সংসার বিষয়ে এতটা অনুভবও ছিল না। यद् अस्मिन् विषये किमपि स्वतन्त्रतया निर्णयं कर्तुं समर्थः भवेत्। कस्मिन् विषये? स्वपत्नीम् आनयन विषये। সে নিজে স্বতন্ত্র রূপে কিছু মতও দিতে পারেনি যাতে করে সে তার স্ত্রীকে তার বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে। বাবা মা সম্বন্ধ করতে চায়নি, বাবা মা বলেছে এটা ভেঙে যা, চলে যা, সেও সেখানে ছেড়ে দিয়েছে। সে তখন তার বুদ্ধি এতটা পরিপক্বমতি সে ছিল না, তার সংসারের বিষয়ে এতটা অনুভবও ছিল না যে বাবা মার উপরে কিছু বলে সেই সম্পর্কটাকে আবার জোড়া লাগাবে। স্পষ্টমস্তি খলু? अतः उभयोः पित्रोः अहंकार सम्मानयोः आखेट विषयः भूत्वा मूकदर्शकः इव सर्वं घटनाक्रमं स असहायतया अपश्यत्। अतः तस्मात् उभयोः पित्रोः नाम तस्य শ্বশুরগৃহে स्वगृहे च উভয়োः পিত্রোः উভয়ত্রাপি তার শ্বশুর শাশুড়ি এবং নিজের বাবা মার হলো
अहंकार सम्मानयोः अहंकारस्य सम्माननस्य च आखेट विषय नाम आखेट विषय नाम হাসির পাত্র মানে কি হাসির খোরাক ছলনা এর খোরাক হয়ে যাওয়া বুঝতে পেরেছো মানে কেউ দোষ করলো আর তুমি তার ফল ভোগ করলে এই আর কি ওই পিতার মাতাদের অহংকারের জন্য অহংকারের হাসির খোরাক আখেরটা বেশি না মানে সেই হয়ে গেল কি মানে বলির পাঁঠা এটাকে হাসির বলা হয় বিষয়, আখেট বিষয় মানে হাসির বিষয়। বা বলির পাঁঠা এটাকে বলা হয় না ওইরূপ আর কি আখেট বিষয়ः भूत्वा मूकदर्शकः इव मूकदर्शकः मूक नाम বোবা बोबा मूकदर्शकः इव घटनाक्रमं सा असहायतया अपश्यत् कीदृशम् अपश्यत् कीदृशतया असहायतया अपश्यत् अर्थम् उमेशः पार्वतीं पुनः स्वगृहं समानेतुं तु ऐच्छत् कः ऐच्छत् ऐच्छत् नाम ऐच्छत् अस्य को अर्थः ইচ্ছা ছিল। হ্যাঁ উমেশের পার্বতীকে আবার বাড়ি নিয়ে আসার ইচ্ছা ছিল। तस्य इच्छा आसीत् पार्वतीं पुनः स्वगृहं समानेतुं तु इच्छत् परन्तु जनकस्य प्रभावं वर्चः च समनुभूय अग्रे पदं स्थापयितुं जनकस्य गृहे जनकस्य प्रभावः तर्हि कोऽपि कर्तुः उपरि कोऽपि किं हरि ओम् गृहे यः कर्ता तदुपरि कोऽपि वदति वा না কপি না না কেউ কথা বলবে না আপনি জিজ্ঞেস করলে মানে বাড়ির বড়র উপরে কেউ কথা বলবে কি না হ্যাঁ যে বড় হয় তার উপরে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না তাই না সেই কারণে উমেশ কিন্তু তার স্ত্রীকে আনতে চেয়েছিল परंतु जनकस्य प्रभावं वर्चः च समनुभूय वर्चः अर्थात बाड़ा बाबार क्रोध एवं प्रभाव प्रभृति अनुभूय
अनुभूय नाम অনুভব করার। বরচাহা মানে কি ক্রোধ? परंतु न श्रूयते महोदय। न श्रूयते। इदानीं श्रूयते। श्रूयते खलु? वर्चः प्रभावं वर्चः च समनुभूय, वर्च नाम क्रोधः तेजः एवं समनुभूय अग्रे पदं स्थापयितुं धैर्यं न प्राप्नोत्। अग्रे पदं स्थापयितुं नाम মানে পা ফেলার ধৈর্য না ধৈর্য পায় না। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বা সামনের দিকে পা ফেলার ধৈর্যম না প্রাপ্নোত। ধৈর্যম না প্রাপ্নোত নাম ধৈর্যম নাম সাহসম ন প্রাপ্নোত, তার সাহস হয়নি। अर्थ स्पष्ट अस्ति? तस्य जनको चिन्तयतः स्म यत् उमेशस्य श्वशुरालयस्थाः आदौ क्षमायाचनां विधाय पार्वतीं स्वतः एव यदा यः इह तदैव अग्रे कोऽपि निर्णयः भवितुम् अर्हति। तस्य जनको चिन्तयतः स्म। कौ चिन्तयतः स्म? रमेशस्य पिता माता च चिन्तयतः स्म। रमेशस्य जनको चिन्तयतः स्म। किं चिन्तयतः? यत् उमेशस्य श्वशुरालयस्थाः, उमेशस्य श्वशुरालयस्य ये जनाः श्वशुरालय आदौ प्रथम पार्वतीं स्वतः एव यदा क्षमायाचनं कृत्वा पार्वतीं सः यदा इह इह नाम उमेशस्य गृहे स्मानयेयुः, अर्थात यदा आनयेत् तदैव कोऽपि निर्णयः भवितुम् अर्हति इति। अर्थ स्पष्ट? महोदय स्पष्ट। মানে এটা কি যদি আসে তাহলে যদি ক্ষমা চায় তাহলে সেটা? হ্যাঁ, মানে তার বাবা মায়েরা কি চিন্তা করতো, যদি উমেশের বাড়ির লোকেরা আগে আসে দিয়ে ক্ষমা চায় তবেই পার্বতী, হয়তো যদি পার্বতী এখানে আসে তখন আমরা আগে না হয় কথা ভাববো। एतस्याम् अवस्थायाम् एव दिवसाः व्यतीताः, मासाः व्यतीताः, वर्षाणि च व्यतीतानि। अर्थात एकम् अपेक्षां कृत्वा कृत्वा दिवसाः व्यतीताः नाम गताः, मासाः व्यतीताः मासाः गताः, वर्षाणि च गतानि।
3 जगह और जगह न श्रूयते महोदय। हरि ओम। श्रूयते वा? महोदय। आं महोदय। परंतु किमपि परिवर्तनं न संजातम्। इतस्तु वर्षद्वयात् पूर्वम् उमेशस्य जनकोऽपि दिवंगतः, किंतु कोनो परिवर्तन आसेनि। इतस्तु वर्षद्वयात् पूर्वम् उमेशस्य जनकः अपि दिवंगतः। इतस्तु नाम उपरन्तु 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 वर्षद्वयात् पूर्वम् नाम 2 बছর आगे। 2 বছর আগে ওর পিতাও মারা গেছে। पिताओ मारा गेलेन। साम्प्रतमपि व्यतीतं घटनाक्रमं परिष्कर्तुं न कोऽपि प्रयत्नशीलः अभवत्। साम्प्रतमपि नाम इदानीं সাম্প্রতিককালে ব্যতীতম ঘটনাক্রমম নাম যে ঘটনাটি ঘটে গেছে, ব্যতীতম ঘটনাক্রমম পরিষ্কর্তুম নাম ঠিক করা, ঠিকঠাক করার জন্য न कोऽपि प्रयत्नशीलः अभवत्। प्रयत्नशीलः नाम চেষ্টা করা, चेष्टां न करोत्, न कोऽपि चेष्टां अकरोत्। यः बुद्धिमत्तापूर्वकम् एतं सम्बन्धग्रन्थिं पुनः संयोजयितुं प्रयतेत। নাম কেউ আর বুদ্ধিপূর্বক কখনোই চায়নি যে এই সম্বন্ধ গ্রন্থিটা, সম্বন্ধের যে জালটা, সেটা যাতে পুনরায় যোগ হয়, এটা কেউই সেই বিষয়ে কোনো ভাবেনি। অর্থ স্পষ্ট अस्ति? सम्यक्। उमेशस्य विवाहस्य वर्षद्वयानन्तरम् अनुजस्य रमेशस्यापि विवाहः सम्पन्नः। कस्य विवाहः सम्पन्नः? रमेशस्य विवाहः सम्पन्नः। रमेशः कस्य अनुजः? उमेशस्य अनुजः। उमेशस्य अनुजः। विवाहानन्तरं च तस्य पत्नी प्रतिमा समग्रं गृहकार्यभारं मनोयोगेन निर्वहति स्म। का निर्वहति स्म? रमेशस्य पत्नी प्रतिमा
रमेशस्य पत्नी प्रतिमा प्रतिमा अथवा प्रतिमा प्रतिमा समग्रं निर्वहति स्म। समग्रं किं निर्वहति स्म? इह समग्रं कार्यभारं गृहकार्यभारं निर्वहति स्म। समग्र निर्वहति। गृह कार्यभारं सा निर्वहति स्म। जनन्याः स्वभावे अपि महत् परिवर्तनं सञ्जातम्। जनन्याः स्वभावे अपि कस्याः स्वभावे? जनन्याः अनन्याः स्वभावे स्वभावे अपि महत् পরিবর্তনম সঞ্জাতম। ছোট বউ আসার পরে মায়ের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। তস্যাহ স্বভাবः পূর্বম ইব ন অবর্তত। কস্যাः স্বভাবः? यशस्य रमेशस्य जनन्याः स्वभावः रमेशस्य जनन्याः स्वभावः पूर्वम इव न अवर्तत। अवर्तत नाम আর রইল না, ওই রকম রইল না। ছিল না। न अवर्तत মানে ছিল না। यद्यपि कदाचित् श्वश्रुबद्धोः अल्पः संघर्षः भवति स्म तथापि सा उग्रतां न प्राप्नोति स्म। नाम यद्यपि नाम यद्यपि अस्य अर्थः যদিও যদিও। कदाचित् नाम কখনো 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 কখনো। श्वश्रुबद्धोः नाम শাশুড়ি বউয়ের মধ্যে হুম, শাশুড়ি এবং বউয়ের মধ্যে অল্পः সংঘর্ষः भवति स्म। अल्पः संघर्ष नाम মানে ঝগড়া হতো ঝগড়া, হ্যাঁ ঝগড়া হতো। होतो तथापि सः सः नाम वो रमेशस्य जनन्या हाँ, सः না না जननी হলে তো স্ত্রী হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ सः संघर्षः सः संघर्षः सः এর সঙ্গে অন্যয়কার সংঘর্ষই বলে। सः মানে ঝগড়াটাই संघर्षः উগ্রতা থাকতো না। উগ্রতাম ন প্রাপ্নোতি স্ম। সেই ঝগড়াটা এতটা উগ্রতা পেত না উগ্রতা যাতে করে তার প্রাপ্ত বউকে- হতো না। হুম, হ্যাঁ। उमेशः एवम् अनुभवति स्म यत् मम जननी एव प्रायः ज्येष्ठवध्वा समं क्रियमाणं घटनाव्यवहारं स्मृत्वा अनुभवप्रभावेण शिक्षां गृहीत्वा स्वयमेव समासि न श्रूयते महोदय।
श्रूयते खलु? महोदय श्रेय श्रूयते? हरि ओम श्रूयते खलु? श्रूयते। आं महोदय श्रूयते। न श्रूयते महोदय इदानीं। কি হচ্ছে এই মুহূর্তের নোটার সময় এমন যে न श्रूयते? श्रूयते इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते तर्हि किमुच्यते? उमेशः एवम् अनुभवति स्म यत् मम जननी एव प्रायः ज्येष्ठवध्वा समं क्रियमाणं घटनाव्यवहारं स्मृत्वा अनुभवप्रभावेन शिक्षां गृहीत्वा स्वयमेव अनुजवध्वा समं सामञ्जस्यं स्थापयति। উমেশ এরূপ অনুভব করত যে আমার মা জ্যেষ্ঠবধ্বা সমম অর্থাৎ নিজের বড় বউয়ের সঙ্গে বড় বৌমার সঙ্গে যে ঘটনা করেছে সেই অনুভব সেই কারণে শিক্ষাম গৃহীত্বা সেই অনুভবকে নিজে থেকেই অনুজবধ্বা সমম নিজের ছোট ভাইয়ের যে স্ত্রী তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপয়তি, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? কোন অর্থ বলতে পারলে? अनुजवधू प्रतिमा उमेशस्य पत्नी पार्वती इव अति विनीता च न बभूव। छोटा ये स्त्री को स्त्री प्रतिमा उसे तो उमेश पार्वतीर मतो पत्नी पार्वती इव पत्नी अति विनम्रतां विहाय तुम महोदय इदानीं श्रूयते। पुनः नेटवर्क गच्छति भो। अनन्तरं सा तु विनम्रतां विहाय किञ्चित् उग्रतया सम्मुखे एव प्रत्युत्तरयति स्म। सा तु अर्थात सा प्रतिमा तार ছোট ভাইয়ের স্ত্রী বিনম্রতাম বিহায় সে নম্রতা ত্যাগ করে কিঞ্চিত উগ্রতয়া কিছুটা উগ্রভাবে সম্মুখে এব মুখোমুখি প্রত্যুত্তরয়তি স্ম মুখে মুখেই উত্তর দিয়ে দিত। हरि ओम श्रूयते? आं महोदय श्रूयते।
अतएव नव परिस्थितिभिः समं सर्वैः अपि गृहे सामञ्जस्यं स्थापितम्। এই কারণে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে ও নব পরিস্থিতিবিহ সমম, সমম মানে সঙ্গে, নব নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সর্বৈহি আপি সকলে সামঞ্জস্য স্থাপিত করেছে, সকলেই গৃহে সামঞ্জস্য স্থাপন করে আছে। অবগতম খলু? अंशं वयं परस्मिन् दिवसे पश्यामः। परस्मिन् मंगलवासरे वासुदेव महोदयस्य वर्गः भविष्यति, ततः आगामिनी मंगलवासरे मम भविष्यति। बुद्धं महोदय। हरि ओम्। हाँ महोदय। अस्तु, तर्हि अद्य एतावदेव, अत्रैव विरम्यते। धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदय।